हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गीक्स फॉर गीक्स। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम्स की पीवाईक्यूज, राइट। इन पार्ट वन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे असिम्प्टोटिक नोटेशन, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। Okay, so in part one, we will cover the important PYQs related to asymptotic notation, recurrence relation, and time and space complexity. Okay, so now first question ये रहा आपकी स्क्रीन पे. This is the first question. Given an integer array of size n, we want to check if the array is sorted in either ascending or descending order. An algorithm solves this problem by making a single pass through the array and comparing each element of the array only with its adjacent element, the worst case time complexity of this algorithm. So basically, in this question, we have to check whether this array is sorted or not sorted, right? In the single pass, right? So basically, and adjacent element को compare करना है. So worst case scenario क्या होगा? Dear student, this is the best case of bubble sort. Okay. So suppose best case of bubble sort. Suppose this array 1, 2, 3, 4, 5 and 6. इन फर्स्ट एक ही पास के अंदर ये कंप्लीट अरे आपको सॉर्टेड, ये बताना है कि दिस इज सॉर्टेड अरे, राइट। सो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस? सो बेसिकली दिस इज द बेस्ट केस ऑफ बबल सॉर्ट. सो बबल सॉर्ट का कोड ऑफ बबल सॉर्ट फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, फॉर j इक्वल्स टू 0, j लेस देन n minus 1 minus I and j plus plus if aj is greater than aj plus 1, then what will happen? Then temporary variable temp equals to what? Temp equals to aj equals to aj plus 1 and aj plus 1 equals to temp. So in this case, whether this array is sorted or not sorted in single pass, so in this algorithm we want some little modification, like let flag is a variable, an integer flag एक वेरिएबल है, एंड इस कोड को मैं लिटिल बिट मॉडिफाई कर रहा हूं. देखिए and now flag equals to 0. If this condition is true, now flag equals to 1. So dear student, suppose this array is sorted. If I equals to 0, then flag equals to 0. So initially flag क्या है? Flag is 1. So this condition is true. I less than n and flag is 1. 1 means true, right? 1 means true. So this condition is true inside this for loop and inner loop. J equals to 0, j less than n minus 1 minus I, j plus plus, aj greater than aj plus 1. If this condition is true, aj is greater than aj plus 1, then flag equals to 1, right? In this array, this condition is never true, right? This is aj greater than aj plus 1. No, आप अंदर नहीं जाएंगे. फर्स्ट aj greater than aj plus 1 कंपेयर हुआ, ये एडजेसेंट एलिमेंट. ओके, आप अंदर नहीं जाएंगे. एंड नेक्स्ट कंपैरिजन एंड नेक्स्ट कंपैरिजन इस बॉडी के अंदर आप कभी नहीं जाएंगे. वो फ्लैग नेवर 1. नाउ
आफ्टर इनर लूप आप फिर यहाँ पर आई प्लस प्लस हियर फ्लैग इक्वल्स टू 0 आप बाहर हो जाएंगे. सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस इज व्हाट? ऑर्डर ऑफ एन. ऑर्डर ऑफ एन. ओके. एंड order of n, and we can say this one also. So here this A option, neither this nor, so this is wrong. Omega of big omega of n but not this, so that's why this is wrong. Big O of n but not not के कारण ये wrong है both. So D is the right answer. Students, right answer is what? Right answer is D. Okay. So इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. ये लास्ट क्वेश्चन गेट 2024 का क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन आल्सो फ्रॉम गेट 2024. कंसीडर फंक्शन, आई थिंक 2023 का क्वेश्चन है ये. कंसीडर फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2. pseudo code, ये फंक्शन 1, दिस इज फंक्शन 2. let f1 and f2 denote the number of times the statement x equals to x plus 1 is executed in function 1 and function 2 respectively. Which of the following statement are true? So which one is true? Okay. So बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको बताना है. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. बेसिकली दिस स्टेटमेंट, हाउ मेनी टाइम दिस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट इन हियर, हाउ मेनी टाइम दिस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट. लाइक दिस वन इज व्हाट? लाइक दिस वन इज f1n and here this is f2n. So what is the relationship between f1n and f2n? Yes students, what is your answer? Yes student, please reply your answer. Abhay Kannojia and Madhurima, what is your answer for this question? तो बेसिकली देखिएगा कि पहला फर्स्ट how many times this statement execute in while n greater than 1, I equals to 1 to n, x equals to x plus 1, right? And this is end for loop. Here n equals to n by 2 seal value. This is end of while loop, right? Let's suppose n greater than 1. Let's suppose n is in, I don't know, n greater than, this condition is true. This condition is true. Then how many times this for loop? How many times this for loop execute? So let first इसको हम बात करते हैं n times, right? And after this for loop, n equals to n by 2 times. So n by 2 is greater than 1. Let's suppose this condition is true. So again, next how many times? N by 2 times. And then next n by 4 times. Next n by 8 times, right? This one. So dear student, f1n equals to this. So f1n equals to what? इसमें से n common ले लीजिए. So it will be 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8. Okay. So here this is smallest value. Dear student, look here, this one, what is the value of this one? So apply common sense. Don't solve complete series, right? Apply just common sense. Here this is, dear student, this is one circle and divided into half. This is 1 by 2 portion, and here this is 1 by 2 portion, right? Again this 1 by 2, and the remaining portion, again this is divided, again this divided into two parts. This is 1 by 4 and this is 1 by 4, right? So this 1 by 4 use this, and again this part is divided into 1 by 8 and 1 by 8, right? Complete whole part is what? This is equals to 1, right? This is equals to 1. So this is what? 1. So it will be what? 2n. It will be what? 2n. Here 2 is a constant. So we can say f1n equals to what? Order of n. Okay. Now come to second part. Here come to second part. Second part is saying for I equals to 1 to 100 into n, x equals to x plus 1, this one. This is simply for loop, how many times it will execute? Sir, 100 into n times. So f2n equals to 100 into n. So it will be, we can say f2n equals to, this is order of n. So both are asymptotically equal. Actually, both are asymptotically equal. Both function f1 equals to f2, both are asymptotically equal.
f1n equals to theta of f2n. Both are asymptotically equal. So which one is correct option, student? A is the right answer. What about this? In this option, f2 is saying ki f2 is the upper bound of f1 function. That's why this is wrong. This is a lower function. Here f2 is a lower function of f1. That's why this is wrong. And in this case, this upper. This is also wrong. And f1n equals to order of n. This is also true. Dear student, this is also true. So right answer is A and D. Both are correct answer. Okay. So this is very simple question. इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं. Come to next question. This is also very simple question. GATE 2023 का question है. So it's very simple question. Online candidate, please reply your answer. Madhurima and Abhay, what is your answer? Let f and g be function of natural number given. It's a very simple question. Gn equals to n square. Which of the following statement is true? So here this is fn equals to simple linear degree function and f2 equals to gn, not f2. gn equals to quadratic degree का function, right? So easily आप कह सकते हैं कि fn equals to which one is upper bound? So this is a quadratic degree function. So this is a quadratic degree function. So we know n less than equals to n square. So here this function f1n is less than equals to cgn. So we can say fn का upper bound क्या है? fn का upper bound order of gn, right? fn का upper bound order of gn, right? Okay, so answer this one is correct. Yes. fn का upper bound ये भी correct है, and this one is also true. This is upper bound, not tightly closed. Okay, so both are true, but this is false. This is false because it indicate what? This indicate कि gn is a lower function of fn. That's why this is wrong. But this is the contradiction of जो हमारा question में given है. fn का upper bound क्या है? gn. But this option saying कि gn is a lower bound of fn. That's why this is wrong. Now come to this question. This is saying fn and gn both are tightly closed. That's why this is wrong. No, dear, this is not tightly closed. N is quadratic degree of function. This is the upper bound of this function. So that's why your option is A and C both are correct, right? So it's a very simple question. Now come to next question. Yes, which of the following statement is true for all positive function fn? So which one is true? Yes, students. What is the correct answer for this question? Yes, online candidate, please reply your answer. Which one of the following statement is true for all positive function fn? Fn square equals to theta of fn ka whole square, where fn is polynomial function, right? And B part, fn square equals to, this is small o, upper bound small o of fn ka whole square, right? C part, fn square equals to order of fn ka whole square, where fn is an exponential function. And D part, fn square is equal, this is big omega of fn ka whole square. Which one is the correct? सो फर्स्ट ऑप्शन इज से, देखिए स्टूडेंट ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है पहला ऑप्शन सेइंग एफ एन स्क्वायर इक्वल्स टू थीटा ऑफ एफ एन का होल स्क्वायर. ओके, तो फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन let fn equals to polynomial function, let fn equals to n cube, let fn equals to n cube. Okay, let fn equals to n cube. So f of n स्क्वायर क्या होगा? इस n की जगह n स्क्वायर पुट करिए इसमें, तो क्या रिजल्ट आएगा सर? n स्क्वायर की पावर 3, so it will be n की पावर 6. Okay, this is here this one. And now इसको देखिए जरा सर, थीटा ऑफ, नॉट थीटा, नाउ चेक दिस, एफ एन का स्क्वायर इक्वल्स टू, इट मीन्स व्हाट? जो फंक्शन दिया गया है उसका होल स्क्वायर.
सर इट विल बी n टू द पावर 6, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल. सो हम कह सकते हैं कि f of n square is tightly close to this f n का whole square. So this is true, absolutely this is true, this is true. So which of the following statement is true for all? This is true. If it is MSQ then more than one, एक से ज्यादा true हो सकते हैं. Come to this, fn square equals to small o fn square and this one. पहले इसको देख लेते हैं C part को. Where fn is an exponential function. Where fn is an what? Exponential function. Question में given है fn क्या है? Exponential function है. Okay. So C part is saying fn is exponential function. Let fn equals to 2 to the power n. Fn is an exponential function, so that's why let fn equals to 2 to the power n, right? So fn square equals to what? Fn square equals to what? 2 to the power n square, right? And fn का whole square equals to what? Sir, 2 to the power n का whole square. It means 2 to the power 2n. Okay. So here, conclusion of the story, here fn square is greater than fn का whole square. Okay. So, but this is saying what? This option means of this option कि fn का whole square, this is the upper bound of this function. But conclusion of this fn का whole square is a lower bound of this function, right? So this is upper bound. So this is contradiction, because in big O के case में क्या आना चाहिए? Less than equals to this sign, less than equals to this sign. But here this is a contradiction. This function is greater function this. So this is a lower function, right? So that's why this is false. This is false. Okay. Now come to B and D. What about B and D? What about B and D? So B option is saying small o. Students, let's take one more function, fn equals to log of n. Fn equals to log of n. Okay. So if fn equals to log of n, then fn square equals to what? Log of n square. It will be 2 log n. Log में power बाहर आ जाएगा. And fn का whole square equals to what? Log n into log n. So conclusion of the let function equals to, if function equal logarithm function, if function is exponential function, then in this case, if function is exponential function, in this case, this is a upper bound function, right? If function is logarithm function, then what? Then fn square is less than this is higher fn square is less than f of n का whole square. Okay. So आप देख सकते हैं it depends on function. So you cannot say it depends on function. It depends. It indicates small o कि this function is the upper of this function. No. In this case, this is upper. In this case, this is upper. But in this case, this is lower function. So we cannot generalize. हम generalize नहीं बता सकते ये बात को. So that's why this is, if function not given, then answer is false. If function not given, then answer is false. It depends on function. If function is logarithm, then this one is upper bound. If function is exponential, then this one is upper bound, right? So we cannot predict the answer for. So this is false, and this is false, and this one is false. So right answer is A. Only A is the correct answer. Okay, student. Now come to next question. Let Tn be the recurrence relation defined as follows. Which one of the following statement is true? What is the correct answer for this question? Okay. Yes, student. आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं. What is the correct answer for this question? So you can apply backward substitution as well as forward substitution method, right? With the help of substitution method, you can solve this. With the help of recurrence relation method, you can solve the answer of this. Discrete mathematics के अंदर उससे भी एक solution हो जाएगा. But हमें यहाँ कैसा दे रहा है? Asymptotic notation के form में.
सो डोंट अप्लाई रिकर्सन ट्री एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, डायरेक्टली आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और इसको निकालिएगा. सो अप्लाई बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो क्वेश्चन में गिवन है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में गिवन है t0 इक्वल्स टू व्हाट, t1, t0 equals to 1, t1 equals to 2. Now what is t2? T2 just find out this equation. 5t n minus 1, so this is 1, and 6t n minus 2, this is t0. Okay, if n greater than equals to, so 5 into t1 equals to what, t1 equals to 2 minus 6 into 1, so it will be 4. So t2 equals to 4. Okay, now t3 equals to what, t3 equals to 5 into t2 minus 6 into t1. Okay, so 5 into t2 equals to 4 minus t2 equals to 4 minus 6 into t1. What is t1? t1 into 2. So it will be what? It will be 20 minus this is 8. So you can, आप यहाँ से conclusion लगा सकते हैं. So t0 equals to 1, t1 equals to 2, t2 equals to what? t2 equals to 4 and t3 equals to what? 8. सो आप यहां से डायरेक्टली आंसर बताइएगा क्या आंसर होगा. सर इफ दिस इज tn देन व्हाट, इट विल बी 2 to the power n. सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, सी इज द राइट आंसर स्टूडेंट. ओके, सो tn इक्वल्स टू थीटा ऑफ 2 to the power n, राइट. ओके, जेपी राजस्थान, दिव्य ज्योति एंड in this time December and January focus on gate. ओके, आप दोनों चीजों को मैनेज करिए बट गेट पे फोकस करिए. दिव्य ज्योति सेन, अच्छा योर क्वेश्चन, आई थिंक योर क्वेश्चन इज कि जॉब देखना चाहिए, गेट करना चाहिए, दोनों करना चाहिए माय डियर, दोनों करना चाहिए. हमें अपना करियर बनाना है, राइट, करियर बनाना है. अगर हमारा प्लेसमेंट अच्छी कंपनी में हो जाता है तो आप चले जाइए, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट अगर आपका प्लेसमेंट नहीं होता देन व्हाट, राइट. सो आपको गेट की तैयारी भी करना चाहिए एंड प्लेसमेंट के लिए भी फोकस करना चाहिए. ओके डियर स्टूडेंट, टेक इट सीरियसली. अगर आप गेट की प्रिपरेशन करते हैं, अगर आप गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली आपका एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाएगा, राइट. बिकॉज इसके अंदर सारा टेक्निकल जितने कोर सब्जेक्ट है, लाइक कंप्यूटर नेटवर्क है, डीबीएमएस है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम है, ओके, एप्टीट्यूड एज वेल इंग्लिश, ये सारी चीजें आपकी जो आपकी प्रिपरेशन के अंदर रिक्वायरमेंट होती हैं, राइट. अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी की बात करें या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बात करेंगे तो डीएसए आपसे, डीएसए इन डिटेल्स बहुत पूछते हैं. डीएसए फैक्टर, डीएसए फैक्टर, उसी से आपका सिलेक्शन होता है. और आप गेट की प्रिपरेशन करेंगे तो इससे अच्छा डीएसए आप कभी नहीं कर सकते, राइट. सो आपको गेट की प्रिपरेशन करना चाहिए. अगर अगर आपको कंपनी में जॉब मिल जाता है, आपको अच्छा पैकेज मिलता है, देन आप चले जाइए, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट अगर आपको अच्छी जॉब नहीं मिलती है, आप गेट में अच्छी रैंक लेके आते हैं, तो आप अच्छी जगह से एमटेक भी कर सकते हैं. आपके पास एक दूसरा ऑप्शन खुल जाता है. ओके, सो आई सजेस्ट यू फॉर एवरी बीटेक स्टूडेंट सभी को गेट की प्रिपरेशन करना चाहिए. ओके, सो for constant a greater than 1, greater than equals to 1, b greater than 1, consider the following recurrence defined on the non-negative integers. ये recurrence relation given है student. This is the recurrence relation. Okay. Which of the following option is correct about the recurrence Tn? This is very simple question. अगर आपने डिजाइन एंड एनालिसिस एल्गोरिथम पढ़ा हुआ है तो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन. जस्ट मास्टर मेथड का फॉर्मूला है, उस पर बेस क्वेश्चन आया हुआ है. ओके, सो master method Tn equals to atn upon b plus fn. केस फर्स्ट केस इसका क्या है डियर स्टूडेंट? केस फर्स्ट, fn equals to n to the power log of a base b minus epsilon. अगर ये है तो इन दिस केस आंसर क्या होगा? Tn equals to theta of n to the power log of a base b. अगर आपको याद है, दिस इज केस वन एंड केस टू. fn equals to
fn equals to theta of n to the power log base a base b, then your answer is theta of n to the power log a base b this is log n. Okay, here इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा log n का. ओके, एंड केस 3 fn equals to this one n to the power log of a base b plus epsilon, and some more condition, then in this case answer equals to theta of fn. ओके, सो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपके मास्टर मेथड पे क्वेश्चन है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट. फर्स्ट ऑप्शन fn इज n log n base 2 if tn equals to this. My dear student, if fn equals to n log n base 2, then tn equals to, you cannot just without a, you need देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, a and b both given होना चाहिए. Here a and b both are missing, so you cannot judge कि answer is this, because you need a and b constant, right? So this is not, you cannot judge कि this is the answer. Now come to b part, fn equals to n upon log n base 2, then tn equals to this one, then tn equals to this one. Then again you need first आप क्या फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, n to the power log of a base b. ये जज करने के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा, you need a and b constant. Okay, so a and b constant missing, that's why this is wrong. And C part, fn equals to this one for some constant, then tn equals to, this is directly formula. C is the correct answer. This is the part one. Dear student, देखिए part one. So right answer is this. Now D part, fn equals to n to the power log a base b, then tn equals to log. No, my dear, this is tightly closed. If this is tightly closed, then answer equals to what? इसके अंदर log n भी होना चाहिए. This is the case 2. Dear student, case 2 multiplied by log n, but here log n missing है. अगर यहाँ log n होता, then this one also true, ये भी true हो जाता है. So ये सारे आपके wrong answer है, right answer is C. Okay, now come to next question. Consider the following recurrence relation. Tn equals to tn by 2 plus t2n by 2 plus 7n, n greater than 0 और 1 if n equals to 0. मैं ये रिकरेंस रिलेशन आपको लिख देता हूं अगर आपको क्लियर नहीं है. t of n equals to t of n by 2 plus t of 2n by 5 plus 7n. Okay, so this is the base condition or binary termination condition. So what is the correct answer for this question? Dear student, आप इसको रिकर्सन ट्री से सॉल्व कर सकते हैं. रिकर्सन ट्री आप लगा सकते हैं इसमें, राइट? एंड मास्टर्स भी लगा सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम मास्टर्स. तो इसमें कौन सा टर्म लीडिंग टर्म है? विच वन इज अ लीडिंग टर्म? यस, टेल मी विच वन इज अ लीडिंग टर्म. इसमें से कौन सा बड़ा टर्म कौन सा है इसमें? ओके, n by 2, this is a 0.5 n by 2, and here 2.4. so this one is a leading term, so miss इसको छोड़ दीजिए आप अगर आप मास्टर लगाना चाह रहे हैं. excuse me. so t of n by 2 plus this constant 7 को रिमूव करिए, this is n. so apply master theorem here. master theorem इसको कंपेयर करिए मास्टर्स के, this is the advanced master method. इससे कंपेयर करिए डियर स्टूडेंट, इस जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है जो ग्रीन कलर में, इससे कंपेयर करिए, राइट? Sir, a equals to what? Sir, here a equals to 1, b equals to what? Sir, b equals to 2, n to the power k. So k equals to what? K equals to 1, n to the power k, this k equals to 1, and p equals to what? Sir, p equals to p term log n term, p equals to 0, then log n term यहाँ से आपका टर्मिनेट हो जाएगा, right? And then check which case, कौन सा केस इससे मैच कर रहा है. This is case 1, a greater than b की पावर k है क्या? a is 1, b की पावर k and 2 की पावर 1. which one is greater than? Sir, this one is greater than. so this case कौन सा केस है dear student? ये कौन सा केस है? a less than b की पावर k. so this is case third. come to case third and case third again two sub cases. It depends on p value. if p is greater than equals to 0, then answer is this. if p is greater than equals to 0, then answer ये आंसर है. इसमें वैल्यू रख दीजिए. yes, p क्या है? 0 है. सो आंसर क्या है? आंसर ये है डियर स्टूडेंट, थीटा ऑफ n टू पावर k log n की पावर p. सो हियर थीटा ऑफ n की पावर k is 1 and log of n की पावर p is 0. so it will be theta of n. okay, it will be theta of n. so right answer is what? Right answer is C. C is theta of n. This is the correct answer.
नो, रिकरेंस ट्री से सॉल्व हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बट लेंदी व्हाई? आप मास्टर्स लगाइए इस पे, अप्लाई कॉमन सेंस। योर आंसर दिस वन इज द लार्जेस्ट टर्म, दिस वन इज द लार्जेस्ट टर्म, सो टेक लार्जेस्ट टर्म एंड अप्लाई मास्टर्स फॉर दिस। आंसर आपका ये आ गया, ऑर्डर ऑफ एन, राइट? आप रिकर्सन ट्री से भी सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आपको मिलेगा, बट रिकर्सन ट्री से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैलकुलेशन सीरीज बनेगी, उसको सॉल्व करेंगे, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ओके, सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं लेना चाहिए था मुझे, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये डायरेक्टली आप बता देंगे। बाय द वे गलती से पीपीटी में आ गया, इट्स वेरी सिंपल। बस इस तरह के क्वेश्चन गेट एग्जाम में आए हुए हैं, तो सिंपल क्वेश्चन भी हमें करना चाहिए। सो सिंपल क्वेश्चन भी करना चाहिए डियर स्टूडेंट। सो इनमें फंक्शन को अरेंज करना है, इनकी ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग, फंक्शन को ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ओके, फंक्शन को ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। सो डायरेक्टली आप देख सकते हैं कौन सा इसमें से लार्जेस्ट है। दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन डियर स्टूडेंट, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो हियर दिस इज f1। ओके, F1 इज ग्रेटर देन, दोनों से ग्रेटर देन है, F1 आपका F2 से ग्रेटर देन है एंड F1 आपका F3 से भी ग्रेटर देन है। सो डोंट कंपेयर F1, F1 सबसे लास्ट में होगा क्योंकि हमें किसमें करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, सो F1 लास्ट में होगा। नाउ कंपेयर F2 एंड F3, सो हियर F2 इज दिस एंड F3 इज दिस, तो इन टर्म को कंपेयर करिए पावर में, विच वन इज द लार्जेस्ट सर, दिस वन इज द लार्जेस्ट, रूट n और log n, विच वन इज द लार्जेस्ट सर, कैसे पता चले, तो दिस इज log n एंड दिस इज रूट n, सो आप दोनों का log ले लीजिए सर, दिस इज log n, okay, here this is 1/2 log n. Now apply n equals to 2 to the power 2 to the power 10, right? 2 to the power 2 to the power 10. This one what? This one produce what? This one produce sir 10. Here this one produce what? Sir 1024 divided by 2. So it will be what? It will be 512. Okay. So here this one root n is the largest function. So f3 is the largest function. So conclusion of the story ki, f3 is greater than f2. So smallest function is f2 and this is f3. So which one is the option? So D is the right answer. I think f2, this one, this is f2. Okay. So D is correct answer. Okay. इसको कर सकते हैं माय डियर, कर सकते हैं, बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड होगा, फ्रैक्शन कॉम्प्लिकेटेड आएगा। सो बेटर है जो हमें टाइम बचाना है, बिल्कुल कर सकते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन से। फैजन खान, यस यू कैन अप्लाई, यू कैन अप्लाई बैक, नो प्रॉब्लम, बट हाँ टाइम लगेगा इसमें। सो टाइम को आपको बचाना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किसको किससे सॉल्व करना चाहिए, राइट? सो दिस इज वन मोर क्वेश्चन, व्हाट इज योर आंसर? Consider the following function fn equals to 2 to the power n, gn equals to n factorial, hn equals to n to the power log n. There are three functions given, right? So, which of the following statement about the asymptotic behavior of fn, gn and hn is true? Asymptotic behavior बताना है students. So, asymptotic behavior के लिए first compare all three function. Which one is the largest function? Which one is the largest function? Dear student, factorial n equals to order of n to the power n. ये किस तरह से bounded है? इस तरह से bounded है. So, which one is the largest? Sir, this one is the largest. This one rank सबसे बड़ा function यही है. Okay. Then rank 2 पे ये है, then 3 पे ये है. So, सबसे largest function क्या है? लार्जेस्ट फंक्शन डियर स्टूडेंट जीएन है। अगर आप देखेंगे विच वन इज द लार्जेस्ट, सो largest function is gn, largest function is gn, and largest function is gn, then after this fn, after this fn, and इसके बाद सबसे लोअर फंक्शन क्या है? लोअर फंक्शन इज hn, लोअर फंक्शन इज hn. सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कह रहा है एफ एन का अपर बाउंड क्या है? जीएन। सर
fn का अपर बाउंड gn, यस दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट पार्ट देखिए, gn का अपर बाउंड hn. सर gn का अपर बाउंड hn, नो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. gn का लोअर बाउंड है hn, डियर स्टूडेंट, gn का लोअर बाउंड है, सो दिस वन फॉल्स, दैट्स व्हाई दिस फॉल्स. हमें बताना क्या है, फॉल्स या ट्रू? यस, हमें ट्रू बताना है. सो दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स. नाउ कम टू बी पार्ट. fn का लोअर फंक्शन gn है, fn का लोअर फंक्शन gn, रॉन्ग स्टूडेंट. डियर देखिए आप, fn का लोअर नहीं है gn, gn क्या है, अपर फंक्शन है, राइट? So this statement wrong, that's why this option is wrong, right? Come to C part. gn का अपर fn है, gn का अपर बाउंड fn है, no, gn का लोअर बाउंड fn है, this o means so this is wrong. Come to D part. hn का अपर बाउंड fn, hn का अपर बाउंड fn, yes correct है, hn का अपर बाउंड fn है, and gn का लोअर बाउंड fn है, gn is lower bound function, so this is correct answer, right? So right answer is this, D is the right answer student. Okay, so इस तरह से asymptotic notation से क्वेश्चंस बनते हैं. आपको फर्स्ट फंक्शंस को कंपेयर करिए एंड देन फिर आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, this question based on time complexity. The time complexity of the following C function. What is the correct answer? This is C code, recursive code है, इसका time complexity आपको निकालना है. JP and Dibyajyoti Sen, Faizan Khan. What is your answer for this question? इस तरह के क्वेश्चन आपको गेट में फ्रीक्वेंटली मिलेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड. अपार्ट फ्रॉम दिस, इस तरह के क्वेश्चन आपके प्लेसमेंट में भी क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. आइदर सर्विस बेस्ड कंपनी और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, इस तरह के क्वेश्चंस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, राइट? सो सॉल्व करिए, इसका आंसर बताइए कि क्या करेक्ट आंसर है. सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के टू मेथड्स हैं. If function is iterative function, then use frequency count method. Okay. If a function is recursive, if algo is recursive, then use recurrence relation method. Okay, student. If algorithm is iterative algorithm, then use frequency count method. If algorithm is recursive, then use recurrence relation method. So this is recursive algorithm. This is recursive algorithm. So apply recurrence relation method, right? So recurrence relation here. Let assume कि recursive Tn. Let assume time complexity for this is number of Tn. Okay. And this statement how many times? Sir, one times. ये कितने बार execute हो रहा है? Sir, one times. And this return, if this is true, then this execute हुआ, right? And for recursive n के लिए Tn है, तो इसके लिए क्या होगा? Sir, T of n minus 1. And this के लिए क्या होगा? Sir, T of n minus 1. Got it, student? Okay. Now the recurrence relation for if n equals to 1, if n equals to 1, then Tn equals to what? Tn equals to this 2. So here 2 is a constant, so you can say 1. Tn equals to sum of 1 plus 1 is 2, 2 is a constant, right? If n greater than 1, then Tn equals to what? So Tn equals to what? 1 plus this, 1 plus this, plus addition का cost, plus return का cost, right? So Tn equals to क्या होगा? मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, 2Tn minus 1, sum of this, plus ये add होगा, इसका cost plus ये return होगा, plus 1 वो this one और plus 1 ये, right? So ये आ गया आपका 2Tn minus 1 plus 3, okay? So 3 is a constant, so you can, for simplification, for easy calculation, so this is a constant, you can assume 1. So now you got a recurrence relation T of n equals to 2Tn minus 1 plus 1. Okay. Now solve this recurrence relation, आपको आंसर मिल जाएगा. Okay. Remember it, if algorithm is recursive, then first find a recurrence relation and solve recurrence relation. The solution of recurrence relation is the answer of complexity of algorithm. So solve this recurrence relation. So dear student, you can apply substitution method as well as masters for decreasing function, right? Masters for decreasing function or substitution method. The solution of this recurrence relation many times ये आप लोगों ने किया होगा, order of 2 to the power n.
अगर आप इस पे मास्टर्स लगा दें, मास्टर्स फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, master for decreasing, so a to the power n upon b, so a to the power n upon b, this term is what, a, this term is b, this term is what, function. So answer is a to the power n by b into fn, right? Here a term is what, sir, 2, and 2 to the power n upon b, sir, b is what, 1 into function kya hai, function is 1, so it will be order of 2 to the power n. Okay, so right answer is a is a correct answer, order of 2 to the power n. Okay, now come to next question. One more question. What is the asymptotic notation of the following recurrence function, recursive function? Again, time complexity आपसे पूछा गया है, asymptotic form में asymptotic analysis आपसे पूछा गया है, right? So this is a recursive algorithm. Again, this is a recursive algorithm. Do something is calling to do something, right? Function do something is calling this. Again, so this is recursive algorithm. So recursive algorithm के लिए first find out recurrence relation and solve recurrence relation. Solve recurrence relation with the by using recursion tree or masters method or substitution method, right, or iteration method. So जो solution होगा वो उसका answer होगा. Okay, so dear student, what is the recurrence relation for this? Let assume do something, this is t, and for n के लिए tn. This code execute हुआ 1 for this and return 1 for this. Okay, and do something, this is for t, and floor function, this is floor function, and square root function square root n. इसके लिए क्या होगा, डू समथिंग दिस वन प्लस दिस एन, एन ए कांस्टेंट इसमें ऐड होगा, तो एडिशन प्लस रिटर्न सब क्या है, कांस्टेंट है. दिस इज नॉट एन. सम स्टूडेंट ये गलती करते हैं, एन कर देते हैं. नो, हमें वैल्यू नहीं निकालना है डियर स्टूडेंट, हमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने एग्जीक्यूट हो रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करना है. आप इसकी वैल्यू निकालने के, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे एन बना देंगे इसको, राइट. एन नहीं करना है, ये गलत है. यहाँ एन ऐड हो रहा है तो प्लस रिटर्न हो रहा है, तो ऐड के लिए 1 प्लस रिटर्न के लिए 1, सो दिस इज 2, 2 इज अ कांस्टेंट, सो इसको आप 1 बोल सकते हैं. ओके, सो दिस इज 1. सो नाउ रिकरेंस रिलेशन आपको मिल गया. T of n, if n is less than equals to 2, then answer is what, 1 plus 1, 1 plus 1 is 2, and 2 is a constant, so constant you can say this is 1, right? If n is greater than 2, then answer will be what, answer will be this one plus 1 plus 1, this one plus 1 is 2, 2 constant है, तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, 1. ओके, सो नाउ रिकरेंस रिलेशन ये रहा आपके सामने. अब आप इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करिए विद द हेल्प ऑफ मास्टर्स. ये मास्टर्स थोड़ा सा ब्लर हो गया है, इमेज लगी हुई है इसलिए क्लियर नहीं आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ. तो डियर स्टूडेंट, ये रहा आपका रिकरेंस रिलेशन. टी ऑफ एन इक्वल्स टू टी ऑफ, remove ceiling function and floor function, no problem. This is your recurrence relation, right? Now this is your recurrence relation. Now sir, after this what should I do? After this अब क्या किया जाए? After this, what is the solution for this question? So dear student, if this is a root function, if it is a root function, then where मैं यहाँ लिख रहा हूँ, if root function, then इस केस में हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 to the power m. Then substitute n equals to 2 to the power m. Okay, if this is cubic function, then substitute n equals to what, 3 to the power m. If it is 1/4 function, तो then root function, then 4 to the power n. ये आप इसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो सब्स्टिट्यूट हियर. नाउ इसको सब्स्टिट्यूट किया तो क्या रिजल्ट आपको मिला? सो इट विल बी व्हाट, t of 2 to the power m and t of this one what, 2 to the power m by 2 plus 1, right?
if base of the recurrence relation base is same, if base is same here, base is दोनों base same है, तो आप नया recurrence relation form कर सकते हो power के form में. New recurrence relation, power of this is what? Sm equals to what? S of m by 2 plus 1, right? This is the property of recurrence relation. Answer आपका same रहेगा, answer पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, right? So now this is the required form of master method. This is the required form of master method. You can apply masters perfectly. So here a equals to what? 1. Sir, b equals to what? 2. Sir, k equals to, compare this term. This is fn term. K equals to what? K equals to 0. That's why this is 1. So k equals to 0 and p equals to what? P equals to 0. So calculate what? A or b की power k. A is 1, b is 2 and 2 की power k is 0. So this is also 1. So a relationship क्या है? A equals to b2 की power k. A equals to b2 की power k. There are 3 cases. A greater than A equals to b की power k. This is case 2. Dear student, this is case 2. Here this is case 2 लिखा हुआ है. Okay. A equals to b की power k. Then 3 sub cases. Again 3 sub cases. Again there are 3 sub cases. So p greater than -1. Then answer is this. So here p is what? P0. P greater than p -1 और p less than. So a part इसका 2 का a part true है. 2 का a part true है. इसको देखिएगा. a part क्या है? इसको देखिएगा. a part ये लिखा हुआ है. कहाँ लिखूं? टू का a part ये लिखा है t of n equals to theta of n2 की पावर log of a base b into log n की पावर p plus 1. बट ये रिकरेंस रिलेशन m के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, राइट? सो ये m के फॉर्म में ये क्या होगा? ये रिकरेंस रिलेशन इसके लिए क्या होगा? इसके लिए रिजल्ट आपका क्या मिलेगा आपको? इसकी जगह क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? m. So this is m. Or here this is m. Okay. Now substitute values. Theta of m2 की power log of a base b. What is a? A is 1. Base b is 2 into log of m की power p plus 1, where p is 0, p plus 1 is 1, right? So log 1, anyways log 1 is 0. So m2 की power 0 क्या हो जाएगा? So this is what? Theta of m2 की power 0 into log of m, right? m2 की power 0 क्या रिजल्ट आएगा? m2 की power 0 से 1 हो जाएगा. So this is theta of log of m. Okay. So conclusion of the story, हमें रिजल्ट मिल गया. रिजल्ट क्या आया? थीटा ऑफ log m. सर व्हाट इज m? व्हाट इज m? डियर स्टूडेंट, हमने ये सब्स्टिट्यूट किया था. व्हाट इज m? सर यहाँ से m क्या आएगा? m इक्वल्स टू log ऑफ n बेस 2. सो सब्स्टिट्यूट m वैल्यू. सो सब्स्टिट्यूट m वैल्यू. सो थीटा ऑफ log of n base 2. So this is the answer for this question. This is the answer for this question. Is any option matching? Yes. This is also base 2, right? So right answer is D. Perfect right answer is D, student. Okay. Right answer is D, right? So इस तरह से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं फॉर रिकर्सिव एल्गोरिथम के लिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. This question related to space complexity. Okay. Consider the following C function: double foo, integer n, integer I, double sum. If n equals to 0, return 1. Else sum equals to 0. For I equals to 0 to I less than n, I plus sum equals to sum plus foo I, return sum. Okay. सो बेसिकली ये पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं अलग से लिख देता हूं. ये लिखा है फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, एंड हियर सम इक्वल्स टू सम प्लस foo I. Okay, this is a recursive algorithm. Here foo is calling to this. Okay. So what is the space complexity? Space complexity क्या होगा स्टूडेंट इसके लिए? So what is the definition of space complexity for recursive algorithm? Space complexity means maximum number of function in the stack at particular time, right?
फॉर रिकर्सिव एल्गोरिथम के लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो दिस इज रिकर्सिव एल्गोरिथम, इनपुट कॉस्ट प्लस स्टैक स्पेस, राइट, स्टैक स्पेस। इनपुट कॉस्ट प्लस स्टैक स्पेस, ओके। तो इनपुट कॉस्ट एंड स्टैक स्पेस, इनपुट कॉस्ट इस एल्गोरिथम का इस वेरिएबल यूज कर रहे हैं, कांस्टेंट है, सो दिस इज अ कांस्टेंट, सो यू कैन रिमूव हियर। स्पेस का मतलब है किसी वेरिएबल के लिए वन स्पेस, राइट, एंड एरे के लिए आपका एड्रेस के लिए वन स्पेस, एरेज के लिए सिंगल सेल के लिए वन स्पेस, सिर्फ एन साइज का एरे है तो उसके लिए एन स्पेस, बट देर इज नो एरे इन दिस क्वेश्चन। इन वेरिएबल आई के लिए कितना स्पेस होगा, आई के लिए वन होगा सर, एन के लिए वन होगा, और सम के लिए वन होगा, राइट। So this is 3. 3 is a constant, so you can remove this. So space complexity is just depend on stack space. So maximum number of function in the stack at particular time. So ये आपका space complexity बताएगा। Maximum number of function in the stack at particular time. Maximum number of function stack at particular time is a space complexity, right? So okay, fine. So ये हमें पता चला। Now अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। Dear student, if n equals to 0, then what will happen if n equals to 0? If n equals to 0, then foo 0, if n 0, then foo 0, foo 0 हुआ कॉल हो जाए, केवल एक ही फंक्शन आपका, एक ही फंक्शन जनरेट होगा, फू 0, ओके, रिटर्न। सो कितने नंबर ऑफ फंक्शन जनरेट हुए सर, 1, ओके सर। इफ n equals to 1, then what will happen if n equals to 1, n equals to 0, no, no return नहीं, come to here, I equals to 0 and 0 less than 1, this is calling to 0, foo 0. So if foo 1, ये किसको कॉल कर जाएगा, टू जीरो को। हाउ मेनी नंबर ऑफ फंक्शन, कितने फंक्शन इसमें इन्वोक्ड हुए, कितने फंक्शन जनरेट हुए स्टूडेंट, नंबर ऑफ फंक्शन इन्वोक्ड इसमें कितने हुए थे, 1, इसमें कितने आ गए, 2, राइट। आप देख सकते हैं सर, इफ n इक्वल्स टू 2, इफ n इक्वल्स टू 2, देन फू 2, इफ दिस इज फू 2, देन 0 से लेके अप टू 1 तक की कंडीशन ट्रू रहेगी। दिस इज कॉलिंग टू फू 0 एंड foo 1, and foo 1 is calling to foo 0. So how many number of function invoked, 1 2 3 4, कितने function invoked हुए, 4. Now if n equals to 3, dear student, if n equals to 3, then what will happen, foo 3 is calling to foo 0, foo 1 and foo 2. Recursive algorithm है, foo 1 is calling to foo 0 and foo 2 again calling foo 0, foo 1 and foo 1 again calling foo 0, right? So कितने नंबर ऑफ फंक्शन इसमें आपके इस प्रोसेस में कितने नंबर ऑफ फंक्शन इन्वोक्ड हुए, देखिए जरा सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो नंबर ऑफ फंक्शन कितने हुए, 8 फंक्शन, ओके। नाउ स्टूडेंट, हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू की पावर 0, इसको 2 टू की पावर 1, हियर दिस इज 2 की पावर 2, दिस इज 2 की पावर 3। इफ इफ लेट सपोज इफ n फंक्शन, देन क्या होगा, 2 टू की पावर n, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फंक्शन इन्वोक्ड, कितने नंबर ऑफ फंक्शन आपके जनरेट हुए, कितने नंबर ऑफ फंक्शन जनरेट हुए, दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बस इन दिस क्वेश्चन दिस इज आस्क्ड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी साथ साथ मैं बता देता हूं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा इसका, कितने नंबर ऑफ फंक्शन इसमें इन्वोक्ड हो रहे हैं, 2 टू की पावर n, so this is the time complexity and space complexity equals to what, maximum number of function in the stack at particular time. So dear student, maximum कितने फंक्शन इसमें स्टैक में होंगे,
दिस स्टैक द ये वाला पोर्शन आपका होगा, तो ये स्टैक में मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन होंगे, राइट? ये foo3, दिस foo3 is calling to foo2, and foo2 is calling to foo1, and foo1 is calling to foo0. So इतने नंबर ऑफ फंक्शन स्टैक में, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन इन द स्टैक, ये होगा रिजल्ट, राइट? एंड दिस डेटा फॉर कितने के लिए है? दिस डेटा फॉर नंबर ऑफ फंक्शन इन द स्टैक 1 2 3 4। कितने फंक्शन है? 1 2 3 4, राइट? So there are four function in the stack, right? Four function in the stack. If this value is n, if n equals to what? 3, then number of function in the stack is what? N plus 1. Number of function in the stack n plus 1, right? If n is 3, then this is n plus 1. If n is n, then n plus 1. So maximum number of function in the stack कितने होंगे? Order of n. Okay. Maximum number of function in the stack at particular time is order of n. आप देख सकते हैं n equals to 3, then number of function in the stack n plus 1. What it is student? N plus 1. If n equals to n, then number of function कितने होंगे? n plus 1. n plus 1 we can say order of n. So space complexity of this is what? Order of n. Space complexity for this is order of n. Okay, fine. इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है। इसके 2 पार्ट के क्वेश्चन थे। वो पार्ट, दिस पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इज बिलोंग्स टू मेमोराइजेशन मेथड, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एबव फंक्शन इज व्हाट? सर डियर स्टूडेंट, आंसर इज बी, ऑर्डर ऑफ n। ऑर्डर ऑफ n इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपसे पूछा गया है। कम टू नेक्स्ट पार्ट, कम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। कम टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, इसको देखिए जरा। नेक्स्ट पार्ट ये कह रहा है, सपोज वी मॉडिफाई द above function and foo and this foo and store the value of foo I from 0 to n as when they are computed. With this modification, the time complexity of the function foo is significantly reduced. The space complexity of the modified function. Dear student, अगर आप ऐसा चेंजेस करेंगे, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका रिड्यूस हो जाएगा। आप क्या करें, एक टेबल में इसको स्टोर कर लीजिए, जितने भी यूनिक फंक्शंस हैं। दिस इज टेबल, राइट? ये टेबल है। इस टेबल में हमने foo0, foo0, foo1, foo2 and foo3 इस तरह से स्टोर कर लिया। whenever we required the value, in this case foo0 अगर आपने स्टोर कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम आप इसे कॉल नहीं करेंगे, राइट? ना foo1 स्टोर कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे? foo1 आपने स्टोर कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम ये आगे फर्दर कॉल नहीं होगा। ओके, ये एक्सप्लोर नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट, ये एक्सप्लोर नहीं होगा। डायरेक्ट वैल्यू आपको कहां से मिल जाएगी? टेबल से डायरेक्ट आप वैल्यू एक्सेस कर लेंगे, राइट? सो सडनली ये सारा पार्ट आपका रिड्यूस हो जाएगा। foo0, foo1, दिस पार्ट रिड्यूस हुआ, एंड foo2, वंस foo2 कैलकुलेट हुआ, दिस पार्ट रिड्यूस हो जाएगा। तो टेबल में कितने फंक्शन एंट्रीज होंगी? यूनिक एंट्रीज होंगी। यूनिक कितने फंक्शंस होंगे इस केस में? सर foo0, foo1, foo2 एंड foo3, राइट? ओके, सो इन दिस केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी सडनली रिड्यूस हो जाएगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज रिड्यूस दिस वन टू ऑर्डर ऑफ n. सर व्हाट अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी माय डियर, दिस इज द मेमोराइजेशन मेथड। मेमोराइजेशन मेथड के अंदर हम ये टेबल एक क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें यूनिक एंट्रीज स्टोर कर रहे हैं। यूनिक एंट्रीज कितनी हैं? सर ऑर्डर ऑफ n। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वही रहेगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्टिल ऑर्डर ऑफ n, स्टिल ऑर्डर ऑफ n। We will discuss this topic in details in dynamic programming chapter, right? Dynamic programming के PYQ जब solve करेंगे तो उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। There are two methods in dynamic programming के लिए, memoization and top down and bottom up method, right? So top down and bottom up both cases में we use table method, right? Okay, in bottom up is a iterative algorithm and top down is a recursive algorithm. टॉप डाउन बॉटम अप को हम क्या बोलते हैं? मेमोराइजेशन मेथड। ये सारा डिटेल हम कहां डिस्कस करेंगे? डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर। ओके, सो आंसर स्टिल ऑर्डर ऑफ n। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग टू फंक्शंस g1n एंड g2n, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा ट्रू है स्टूडेंट इसमें?
ये इंटरवल में डिवाइडेड है 0 से 10,000 और ये 100. सो लेट n इक्वल्स टू 0, 100, 0 to this is 100 and here this is 10,000. Okay. So here 0 to 100, 0 to 100, here 0 to 100. So interval of 0 to 100, this is 0 to 10,000 and after 10,000. So G1n स्टूडेंट क्या कह रहा है, 0 to 100 इसी इंटरवल के बीच में होगा, दैट इज NQ. एंड G2n equals to what? 0 to 100, this interval given, this is n. Okay. Now 100 to 10,000, 100 to 10,000, यही है G1n. G1n equals to what? 100 to 10,000 still NQ, and G2n equals to 100 to 10,000. This is NQ, and after this G1n equals to what? 10,000 से greater than, so this is n square, and G2n equals to what? G2n equals to greater than 10,000, so this is NQ. Okay. So for large value of this, इस पे चेक करिए, देखिए स्टूडेंट, this is a, इस n0 पॉइंट पे 0 to 100 के बीच में ये क्या है, दोनों इक्वल हैं, बट आफ्टर दिस इज n0 पॉइंट एंड n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n0. हम लार्ज वैल्यू के लिए असिम्प्टोटिक एनालिसिस करते हैं, एंड टुवर्ड्स अप टू इनफाइनाइट तक अगर देखेंगे तो ऑलवेज G2 function is a upper bound of G1 function. G2 function is a upper bound of G1 function. So conclusion of the story, G1n equals to what? N square, and G2n equals to what? NQ. So we can say G1n का G2n, this one constant CJ, right? So this is the definition of big O, right? This is the definition of big O. So is there any option? G1n equals to G2n. G1n is order of G2n. Yes, this option is correct. And G1n is order of NQ. No, G1n is not order of NQ. G1n क्या है? Order of N square. नहीं, ये भी कह सकते हैं G1n is, this is also true. G1n is N square, so we can say NQ. This is also true, student. MSQ question है ये. MSQ देखिए. This is also true. G2n is order of G1n. No, this G2 का ये upper bound है. This is false. This is false. And G2n is order of n. This is also false. This is also false. G2 is not omega of n, right? Big O of n. So conclusion of the story, A and B both are correct answer. Okay. A and B both are correct answer. Now come to next question. This is very silly question. The recurrence relation that arise in recurrent complexity of binary search. So my dear student, binary search क्या करेगा, आपको हाफ हाफ में डिवाइड कर देता है, every step half half, right? So recurrence relation for this every step में T of n equals to T of n by 2 plus what? Constant, right? First compare root, then either left half or right half. दोनों में सर्च नहीं करेगा. First compare this, इसके लिए क्या है? Constant, this one constant for this, compare for this data element. If it is matching, then return. If it is not matching, less than, go to left side, right? Greater than, go to right side. So इस तरह से either left half or right half में. So we can एक ही part consider करेंगे Tn by 2. So recurrence relation Tn equals to Tn by 2 plus 1 या constant. So this is the answer. This is the answer here. K is a constant. B is a correct answer. Okay. Yes, this is a correct answer. Either left half or right. This is not. इसमें दोनों केस कवर हो गए. Log in, no, my dear. No. So right answer is B. Okay. Now the minimum number of comparison required to find the minimum and maximum of 100 numbers. Finding maximum minima using divide and conquer.
Finding maximum minima using divide and conquer. Using divide and conquer. इसको शॉर्टकट आप DAC लिख दो, ऐसे लिख देते हैं DAC मैक्स मिन। इसके लिए क्या फॉर्मूला है? 3n/2 - 2। डियर स्टूडेंट, 3n/2 - 2। ओके, नंबर ऑफ कंपैरिजन मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ 3n/2 - 2। ओके, so here 3 into 100/2 - 2, so this is 50, 53 is 150 and minus 2 148. 148 is the right answer, so 148 D is the correct answer. Am I right? 100 divided by 2 50, 150 minus 148, yes 148 is the correct answer. Okay, so इस पे बेस कई बार क्वेश्चन आपके गेट एग्जाम में पूछे गए हैं, so इसको ध्यान रखिएगा। Now come to next question. So yeah, the matching question. Consider a list of recursive algorithm and a list of recurrence relation. Shown below each recurrence relation. Matching का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आपको recurrence relation मैच करना है। बाइनरी सर्च, मार्च सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड टावर ऑफ हनोई का क्या recurrence relation है? ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल। बाइनरी सर्च का भी हमने डिस्कस किया था, क्या था? दिस इज बाइनरी सर्च, Tn/2 + 1 constant. Merge sort is 2Tn/2 + n. Merge sort is always 2Tn/2 + n. So merge sort is this. 2Tn/2 + Cn. And quick sort is what? And tower of Hanoi. अभी मैंने डिस्कस किया था टावर ऑफ हनोई का, ये रहा। ओके, एंड क्विक सॉर्ट का ये रहा। अब मैच कर लीजिए, जो ऑप्शन होगा वो आंसर होगा आपका। ओके ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज द आंसर। देखिए जो आपको मैच हो रहा है वो आंसर होगा। Dear students, this is very important session. So everybody please like the session. I request to all of you, everybody please like the session and please share the session to your friends. Okay. Now come to next question. Prim's algorithm for, again this is a matching question. This is very silly question. Prim's algorithm for minimum span tree. Prim's क्या है? Greedy है. My dear Prim is greedy. Is there any greedy? Yes, this is greedy. Floyd Warsaw is a dynamic. Is there any dynamic? Yes, Floyd Warsaw, this is dynamic. Okay. Merge sort is a divide and conquer. Is there any merge sort? Merge sort is any divide and conquer. And Hamilton circuit is a backtracking. Is there any backtracking? Yes, this is a backtracking. So very simple. Okay. इस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो आप इनको, आपको पता होना चाहिए कौन सी स्ट्रेटजी से क्या सॉल्व होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू, दैट्स ऑल। स्टूडेंट्स आप लोग देखते रहेंगे या लाइक भी करेंगे, सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज एवरीबॉडी प्लीज लाइक द सेशन एंड प्लीज शेयर द सेशन राइट टू योर फ्रेंड्स। ओके, सो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे एल्गोरिथम के पार्ट 2 में। ओके, जिसमें हम सॉर्टिंग की कुछ एल्गोरिथम को डिस्कस, सॉर्टिंग की PYQs डिस्कस करेंगे। सॉर्टिंग में क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आज की क्लास यही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।